Hello children, welcome back to the digital classes. I hope you are all doing well. In our previous session, you learnt about compound ratios. We continue the same topic and we are going to learn some more interesting concepts in this session. Let us start. Can you identify the symbol shown on your screen? That's good. It is the symbol of a percent. But do you know what do you mean by percent? Yes, percent means for every 100 or for 100. And children, what do you mean by this 85 percentage? You are right once again. 85 percentage means 85 out of 100 or it is 85 divided by 100. Now this can be written as 0.85 in the decimal form. You have already learnt about the simple interest concepts in the previous session. Now what do you mean by principal, children? That's right. The money borrowed or lent out for a certain period is called the principal. For example, say borrowed 25,000 rupees from a bank. So that amount is called your principal. Then what is meant by interest, children? You are right once again. Interest is the extra amount paid on the principal amount with a earmarked percentage. Let's understand what do you mean by that. You have taken a loan of say 10,000 rupees and the bank charges 10%. That means at the end of the year you are going to pay 10% of that 10,000, that is 1,000 rupees as the extra amount. This extra amount which we pay to the bank, we call it as the interest. Now children, the amount that is repaid back is equal to the sum of the borrowed principal and the interest. That is, the amount is given by principal plus the interest. That is, whatever we have taken from the bank plus the interest that you are going to pay as extra amount. Simple interest is calculated using the formula I is equal to P into T into R by 100, where P is the principal, T is time period and R is the rate of interest. So let us consider a scenario here. Meet Swati and Sweta. Both are friends and both have taken a loan of 50,000 rupees for a period of 4 years. Now Swati, she is paying an interest of 12% per annum per simple interest. Now whereas if you see Sweta, the rate of interest is 10% per annum, but the interest is compound interest. Now children, who has to pay more interest now? Do you know how to calculate the compound interest? Well, in today's session, that is our topic, compound interest, we are going to learn all these concepts. So at the end of this session, you will learn VAT, GST and also you will calculate compound interest. So children, before we start calculating the compound interest, let us see what actually meant by GST and also VAT. Let's see. You might have gone to a hotel many a times and you might have purchased automobiles from some showrooms. Now when you purchase this automobile or when you take food parcel or you eat in a restaurant, you are given a bill, right? Suppose a bill is generated this way. Now if you notice the highlighted portion, there you can see some important thing, that is GST. Now what do you mean by this GST? We are going to learn about sales tax or VAT. So VAT stands for value added tax. Government collects taxes on every sale and this is called as VAT. But children, why does the government charge taxes on us? Did you ever think about it? Why we need to pay taxes? Yes, let's see. Government does several welfare activities. You might have seen in news or even in newspaper, right? That is laying the roads. Not only that, construction of hospitals,
maintaining them. So, all these are welfare activities done by the government. Now, how do you think the government get this money? Yes, they are going to collect as taxes from us. Now, I think you understood why the government charges tax on us. Okay, children. Now, sales tax is levied on the sale of movable goods, whereas VAT is imposed on goods only and not services, and it has replaced sales tax. The percentage of VAT is different for different items. Like for example, if you are purchasing groceries, so the percentage is different. Whereas if you are purchasing say automobile, that is different. Now, VAT is charged on the selling price of an item and will be included in the bill. So, whenever you purchase any item, you can see there will be a VAT in that bill. Now, let us understand the concept of VAT and how they calculate it, sales tax or VAT, with an example. The cost of a table is 1100 rupees and the sales tax charge was 5%. Now, we will find out the bill amount. So, children, the cost is how much? 1100, and what is the sales tax charged? 5% only. Now, how much of sales tax we need to pay? Yes, 5% of the 1100, that is the cost of the table. So, 5% means 5 by 100 into 1100. Now, 100 will cancel with 100 one times and it will go in 1100 11 times. Now, what is left, children? So, we are left with 5 into 11. So, what is that, children? 5 into 11? Yes, it is 55. That means we need to pay a tax of 55 rupees. So, what will be the bill amount, children? Yes, it is the cost of the item plus the sales tax, that is 5% of 1100. So, substituting these values, we get 1100 plus 55 rupees. And adding this, what do you get, children? Yes, we get 1155 rupees. So, this is the bill amount that we have calculated. I hope, children, you might have understood the concept of sales tax and VAT, and you have seen a problem also to calculate the sales tax. We will move on to our next concept, that is GST. Let us see. So, GST stands for Goods and Service Tax. It is a single indirect tax on the supply of goods as well as services, and it was introduced in July 2017, and it is imposed on the basis of value addition at each stage of the movement of the goods and services. So, children, what is the formula to find the simple interest? Yes, it is A is equal to P into 1 plus T into R by 100, where P is the principal, T is the time period and R is the rate of interest. So, this is the formula to find out the amount when we are using simple interest. Okay, children. But do you know what is meant by compound interest? Yes. Compound interest is nothing but the interest that you earn on the interest. So, that means the interest is going to earn some more interest for you. That is nothing but compound interest. Now, let us deduce a formula to find the compound interest. So, let us calculate for the first year. Let the principal be P1 and rate of interest be R, and time period is, as we have seen, we are calculating it for 1 year. So, T is 1 year. Now, we have already learned that the sum or the amount is given by P into 1 plus T into R by 100. Now, let us substitute the values. So, here the amount for the first year, I will mark it as A1 and P1 is the principal into 1 plus TR. So, here T is 1. So, we have substituted the value as 1 into R by 100. So, we get P1 into 1 plus R by 100. Now, this is the amount after 1 year. Now, let us calculate for the second year also. Now, in second year, the principal I am assuming it as P2. Now, here if you notice, A1, that is the amount which is calculated after the end of first year, that becomes the principal here. Okay? So, P1 into 1 plus R by 100 is going to be the principal for the second year, whereas the rate of interest and the time period remains same.
Now, let us calculate the amount at the end of 2 years. So, amount A2 is principal P2 into 1 plus R by 100. But children, we have seen that the value of say P2 is P1 into 1 plus R by 100. Now, let us substitute it. On substituting, what do you get? P1 into 1 plus R by 100 into again 1 plus R by 100. Now, these two terms are same. Suppose you have A and A. When you multiply A and A, what do you get, children? A square. In the similar manner, we are multiplying 1 plus R by 100 into 1 plus R by 100. So, what do you get, children? Yes, that is 1 plus R by 100 whole square. So, what is the value of A2 now? So, P1 into 1 plus R by 100 whole square. So, this is the amount at the end of 2 years. Now, children, can you guess what is the amount at the end of 3 years? If you notice, A1 is P1 into 1 plus R by 100. So, there is no power here, that means 1, right? And in the second year, A2 is P1 into 1 plus R by 100 whole square. So, since we are taking second year, the power is 2. Now, what will be in third year? That is great. It is A3 is equal to P1 into 1 plus R by 100 whole to the power of 3. So, why we have taken 3 years, children? Because it is at the end of 3 years. So, that is why we got the power as 3. Now, if we continue like that, after some n years, now what will be the amount? That is right. An is equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power of n. So, here this n because after n years. So, this is the formula to find the amount in compound interest. Okay. I hope you have understood the formula, children. Now, let us see the formula for calculating the compound interest. So, the amount at the end of n years using compound interest is given by A is equal to P into 1 plus R by 100 whole power n. And children, here P is the principal, R is the rate of interest and n is the time period. So, now let us apply the concept of this compound interest in solving Swati and Sweta's problem. Swati borrowed 50,000 at 12% per annum for 4 years at simple interest, and Sweta borrows how much? The same amount, and the time period is same, but at 10% per annum compounded annually. Now, let us see who has to pay more interest and by how much they have to pay. Okay? Let us see. So, let us see the case of Swati. The principal P is 50,000, rate of interest is 12% per annum, and the time period is 4 years. Now, children, what is the formula to find simple interest? Yes, it is I equal to P into T into R by 100. Now, let us substitute the values of P, T and R. So, we get 50,000 into 4 into 12 by 100. Now, let us cancel 100. So, with 100 only we will cancel, 100 goes in 100 one time, whereas in 50,000 it goes 500 times. Now, what is left, children? Yes, we are left with 500 into 4 into 12. On multiplying these three, we get, yes, 24,000. This is the interest Swati has to pay. Now, children, what is the formula to find the amount? Yes, amount is equal to principal plus interest. Now, substituting the values of principal and interest, that is 50,000 plus 24,000, what do you get, children? Yes, we get 74,000 rupees. Now, this is the amount Swati has to pay at the end of 4 years. Now, let us find out how much Sweta has to pay. Now, children, let us see about Sweta. So, principal borrowed is same, that is 50,000 rupees, rate of interest is 10% per annum, whereas the time period remains same, that is 4 years. Now, we know that the formula to find the compound amount using compound interest, that is A is P into 1 plus R by 100 whole power n. We use this formula because here the interest is compounded annually. So, now let us substitute the values of P and R, that is 50,000 into 1 plus 10 by 100 whole to the power of 4. Now, let us simplify this. On taking LCM here, that is between 1 and 10 by 100. So, the LCM is
100 here. So, we get 100 plus 10, that is 110 divided by 100, and the whole power 4 remains the same. On simplifying this, we get the amount as 73,205 rupees. So, this is the amount Sweta has to pay at the end of 4 years. Now, let us compare their values. Yeah, we have seen Swati has to pay 74,000, whereas Sweta has to pay 73,205 rupees. So, from this, what do you conclude, children? Yes, Swati pay more interest than Sweta. But how much? Let us subtract those amount. So, 74,000 minus 73,205 rupees will give you 795 rupees. That means Swati has paid 795 rupees more than Sweta. So, children, I hope you have learned the concept of compound interest clearly, and also you are very well versed with the application of its formula. Now, let us understand these concepts much more clearly using some solved problems. The cost of a TV is 20,000 rupees and the GST charge is 18%. Find the bill amount. Let us start with the solution. Given cost of TV is 20,000 and the GST is 18%, and GST paid should be how much? 18% of this 20,000. So, 18% means 18 by 100 into 20,000. So, 100 one times, and in 20,000 100 goes 200 times. So, it is 3,600 rupees. So, this is the GST which has to be paid. So, children, what is the formula to find bill amount? Yes, it is cost of TV plus the GST. Now, let us substitute these values. That is 20,000 plus 3,600. On adding this, we get 23,600. So, this is the bill amount, children. So, bill amount equal to 20,000 plus 3,600, which is 23,600. So, let us move on to our next problem. Vashish took 25,000 from a bank to renovate his house. He took the money at 10% per annum simple interest for 5 years. Now, what are his monthly repayments? Let us start with the solution. So, the principal is 25,000, rate of interest is 10% per annum, and the time period is 5 years. The simple interest is given by I equal to P into T into R by 100. Now, let us substitute these values. Now, we will cancel 100, that goes one time, and here in 25,000 it goes 250 times. Now, what is left, children? 250 into 5 into 10. So, on multiplying this, we get 12,500 rupees. So, the interest is 12,500 rupees. So, the total amount to be paid is principal plus the interest, that is 25,000 plus 12,500. On adding this, you get 37,500. So, now Vasisht has to pay 37,500, but in monthly installments. So, since there are 5 years, so 5 into, and in a year we have 12 months, so we are dividing with 5 into 12. So, on dividing them, so 5 goes one time, and in this it goes 7,500 times, 12 one time, and 12 goes 625 times. So, what do we get, children? Yes, 625. So, Vasisht has to pay an installment of 625 rupees per month. Let us start our next problem. So, let us start our next problem. The population increases by 10% every year. If the population of the village is 20,000 in 2020, then what would be its population in 2022? Let us start with the solution. Now, what is the present population in 2020? That is 20,000. And increase in population, that is rate of interest, we can call it as R. So, that is 10% every year. And the time period is how many years, children? Yes, 2 years, because from 2020 to 2022. So, there are only 2 years. Now, the formula to find population after 2 years is given by A is equal to P into 1 plus R by 100
whole power n. Now let us substitute these values. So what do you get, children? 20,000 into 1 plus 10 by 100 whole square, because n value is 2. On taking LCM, we get 20,000 into 110 by 100 whole square. Let us simplify this. Now 100 one times, and in 20,000 it goes 200 times. Similarly 100 one times here, and then it goes only 2 times. Now on multiplying this, 2 into 110 into 110, we get 24,200. So we can say that the population of the village in 20,022 will be 24,200. So children, today we have learnt the concepts of VAT, GST and compound interest, and also we have solved some of the problems based on these concepts. I hope you have understood very well. So before we end our session, let us quickly recap what we have learnt. VAT stands for value added tax. VAT will be charged on the selling price of an item and will be included in the bill. GST stands for goods and services tax. Simple interest is given by I is equal to P into T into R by 100, where P is the principal, T is time period and R is the rate of interest. And the amount is given by principal plus interest. Simple interest is an increased percentage on the principal. Amount A is given by P into 1 plus T into R by 100, where P is principal, T is time period and R is rate of interest, and this is only in the case of simple interest. Okay, children. Compound interest allows you to earn interest on interest. The amount at the end of n years using compound interest is given by A is equal to P into 1 plus R by 100 whole power n. Here P is the principal, R is the rate of interest and n is the time period. So children, I am going to give you some problems to work out in your home, and after solving them, you show to your teacher. Calculate compound interest on 2,500 over a period of 1.5 year at 10% per annum if interest is compounded half yearly. Abhinav deposited a sum of 50,000 in a bank for 2 years, compounded annually at 8.5% per annum. What amount will he get on maturity? Now, Kruti purchased a toy for 750 rupees. GST charge is 8%. Find the bill amount. And the last problem is, the population of a town is 25,600. It is found that the rate of increase in the population is 12% per annum. Find the population after 3 years. So children, with this we have come to the end of our session. I hope you have learnt all the concepts clearly. So goodbye and take care. భారతీయ పౌరుల ప్రాథమిక హక్కులు. భారత రాజ్యాంగం భారతదేశ పౌరులందరికీ కొన్ని ప్రాథమిక హక్కులు కల్పించింది. హక్కు అంటే అవకాశం, అధికారం కలిగి ఉండడం. ప్రాథమిక హక్కులు పౌరులకు తమ వ్యక్తిత్వాన్ని అభివృద్ధిపరుచుకున్నటకు, బాధ్యత కలిగిన పౌరులుగా హుందాగా జీవించుటకు, ప్రభుత్వ పరంగా చట్టరీత్యా ఇవ్వబడిన స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాలు అనుభవించుటకు కల్పించబడ్డాయి. భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న ప్రాథమిక హక్కులేంటో ఒకసారి చూద్దాం. సమానత్వపు హక్కు. సమానత్వపు హక్కు ప్రకారం
చట్టం దృష్టిలో అందరూ సమానులే. వ్యక్తుల మధ్య కుల, మత, వర్ణ, ప్రాంత, లింగ, సంపద, విద్య వంటి విచక్షణలను ఈ హక్కు నిషేధిస్తుంది. ఈ హక్కు ప్రకారం రాజ్యాంగంలోని చట్టాలందరికీ ఒకే విధంగా వర్తిస్తాయి. స్వాతంత్ర్యపు హక్కు. భారత రాజ్యాంగం తన అధికరణలు 19, 20, 21, 22ల ద్వారా స్వాతంత్ర్యపు హక్కుని ఇస్తుంది. స్వాతంత్ర్యపు హక్కు 6 స్వేచ్ఛలకు హామీ ఇస్తుంది. వాక్ స్వాతంత్రం, భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ, ఆయుధాలు లేకుండా శాంతియుతంగా సమావేశమయ్యే హక్కు, సంఘాలుగా సభలుగా ఏర్పడే హక్కు, స్వేచ్ఛగా సంచరించే హక్కు, భారతదేశంలో ఎక్కడైనా నివసించడానికి, స్థిరపడడానికి హక్కు, ఏ వృత్తి అయినా ఉపాధి, వాణిజ్యం, వ్యాపారమైన చేపట్టే హక్కు. మత స్వాతంత్ర్యపు హక్కు. భారతదేశంలో పౌరులందరికీ మత స్వాతంత్ర్యపు హక్కును అధికరణలు 25, 26, 27 మరియు 28ల ప్రకారం ఇవ్వబడింది. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం భారతదేశంలోని అన్ని మతాలు సమానమే. ఏ మతము ఇతర మతంపై ప్రాధాన్యతను కలిగి లేదు. ప్రతి పౌరుడు తన ఇష్టానుసారాన్ని మతాన్ని అవలంబించుటకు స్వేచ్ఛ కల్పింపబడ్డాడు. రాజ్యాంగ పరిహారపు హక్కు. భారత ప్రజలు తమ ప్రాథమిక హక్కులకు ఉల్లంఘన జరిగినప్పుడు రాష్ట్రాల ఉన్నత న్యాయస్థానాలను, సర్వోన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించే హక్కు ఉంది. న్యాయస్థానాలు ప్రత్యేక ఆదేశాలు జారీ చేయడం ద్వారా ఈ హక్కులను తిరిగి అందిస్తాయి. ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులు ఉల్లంఘించబడకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి. సాంస్కృతిక, విద్యా సంబంధమైన హక్కు. భారతదేశం అనేక మతాలకు, భాషలకు మరియు సంస్కృతులకు నిలయం. రాజ్యాంగం వీరికి కొన్ని ప్రత్యేక హక్కులను ఇస్తుంది. అధికరణ 29 మరియు 30ల ప్రకారం మైనారిటీలకు కొన్ని హక్కులు ఇవ్వబడినవి. మైనారిటీలు అనగా మతం, భాష మరియు సాంస్కృతిక పరమైన మైనారిటీలు. తమ మతాన్ని, భాషలను, సంస్కృతిని రక్షించుకున్నటకు మైనారిటీ సంస్థలు స్థాపించుకోవచ్చును. ఆ సంస్థల ద్వారా వారు తమ అభ్యున్నతికి పాటుపడవచ్చును. దోపిడీని నిరోధించే హక్కు. అధికరణలు 23 మరియు 24 ప్రకారం పట్టు బానిసత్వం మరియు బాలకార్మికుల విధానాలు నిషేధం. మరియు 14 సంవత్సరాలలోపు బాలబాలికలతో అపాయకరమైన పనులు అంటే కర్మాగారాల్లో, గనుల్లో పని చేయించుట నిషేధం. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, औलियाए तलबा व सरपरस्त और असातिज़ा इकराम, आज की डिजिटल क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने पिछली क्लास अटेंड की है? ठीक है। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कुव्वत की कितनी किस्में हैं? जी बिल्कुल सही, कुव्वत की 2 किस्में हैं। पहली किस्म
مس کرنے والی قوت یا تماسی قوت کنٹیکٹ فورس، اور دوسری میدانی قوت یا فاصلاتی قوت فیلڈ فورس۔ آئیے پھر سے ایک مرتبہ ان قوت کی قسموں کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر قوت کے اقسام دکھائی دے رہے ہیں، چلیے اسے پڑھیے۔ قوت تجاذب گریویٹیشنل فورس، یہ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز کو ہم اوپر اچھالتے ہیں وہ واپس زمین پر ہی آ کر گرتی ہے، جیسے یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی تصویر میں درختوں سے پھل کا گرنا بتلایا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دو کمیتوں کے درمیان پائے جانے والی قوت بھی تجاذبی قوت ہوتی ہے، جس طرح سورج اور زمین کے درمیان اور زمین اور چاند کے درمیان، یہ تمام کشش ہے یا فاصلاتی قوت ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، یہاں پر قوت کو سمجھانے کے لیے کمانیدہ ترازو پر کچھ قوت لگائی جا رہی ہے۔ کمانیدہ ترازو کے ایک طرف نیوٹن کی اکائیاں لکھی ہوئی ہے، دوسری طرف گرامز کی اکائیاں لکھی ہوئی ہے، اور یہاں پر گرامز میں 250 گرام اور جب نیوٹن میں آتے ہیں تو دیکھیے 2.5 نیوٹن۔ اب جب اس کمانیدہ ترازو کے ہک کو کچھ قوت سے کھینچا جاتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا کتنا وزن یہاں پر اثر کر رہا ہے اور یہاں پر اس کی کتنی قوت یہاں پر اثر کر رہی ہے۔ تبادلہ خیال کیجئے۔ پیارے بچوں، اس طرح کے سوالات آپ کے ذہن کو جلا بخشتے ہیں، اس طرح کے سوالات آپ کے سوچنے کی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں اور آگے مسابقتی امتحانات میں بھی آپ کو بہت کارآمد رہیں گے۔ اس سوال پر نظر ڈالیے۔ شکل میں، یعنی بازو جو شکل دکھائی دے رہی ہے، شکل میں دو اجسام ہیں، ایک جسم اے اور دوسرا ہے بی۔ سوال یہ ہے کہ ان دو اجسام پر دو طرح کی قوتیں عمل پیرا ہیں، ان کو الگ الگ قوتوں کے تحت، یعنی رگڑ کی قوت اور عمودی قوت کے تحت تقسیم کرنا کیوں ضروری ہے؟ کم سے کم دو وجوہات بتلائیے۔ پچھلے سبق میں یا پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا کہ قوت کی نہ صرف مقدار ہوتی ہے بلکہ قوت کی سمت بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر پہلی بات، یہاں پر رگڑ کی جو قوت ہے وہ رگڑ کی قوت کی سمت افقی ہے، یعنی فرش سے چپکی ہوئی، فرش سے لگی ہوئی آڑی سطح پر یہ قوت عمل کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رگڑ کی قوت کی کچھ مقدار بھی ہو۔ تو ایک تو ہو گیا رگڑ کی قوت کی مقدار اور رگڑ کی قوت کی سمت۔ اسی طرح دوسری جو قوت ہے عمودی قوت کی سمت بتلانا ضروری ہے۔ دوسری وجہ، قوت کی مقدار بھی بتلانا ضروری ہے۔ یہاں پر ٹیبل پر آپ کی فزیکل سائنس کی کتاب رکھی ہوئی ہے اور اس کتاب پر دو طرح کی قوتیں عمل کر رہی ہیں۔ ایک قوت اوپر سے نیچے کی جانب، یعنی زمین کی کشش، دوسری قوت عمودی قوت جو نیچے سے اوپر کی طرف۔ یہ دونوں قوتیں اگر مساوی ہوں تو کتاب اپنی جگہ پر ساکن حالت میں رہے گی، اگر ان دونوں قوتوں میں کوئی ایک قوت کم زیادہ ہو تو کتاب ساکن حالت میں نہیں ہوگی بلکہ متحرک ہوگی۔ چلیے، حاصلہ قوت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں سمجھنے سے پہلے کچھ مشغلے آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ مشغلے آپ اپنے طور پر اپنے گھر پہ انجام دیجئے۔ یہاں پر ایک لڑکا ہے جو ایک لکڑی سے بنے وزنی میز کو ڈھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور چونکہ میز وزنی ہے، بھاری ہے، اور اس کو ڈھکیلنے کے لیے جو درکار قوت ہے وہ قوت کی کمی ہونے کی وجہ سے میز اپنی جگہ سے آگے حرکت نہیں کر پا رہا ہے۔ جب وہ اپنے دوست کو مدد کے لیے بلاتا ہے اور دونوں مل کر ایک ہی سمت میں قوت لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ میز اپنی جگہ سے آگے ہٹنا شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، تیسری شکل پہ غور کیجئے۔ وہی دو دوست تھے لیکن ان کی لگائی جانے والی قوت مخالف سمتوں میں ہے۔ حالانکہ قوت کی مقدار مساوی ہے لیکن سمت مخالف ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جب
اس میز پر مساوی مقدار والی مخالف سمتوں میں قوت عمل کرے گی تو اس کے نتیجے میں یہ میز اپنی جگہ سے حرکت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی بالکل حرکت نہیں کرے گا، وہ اپنی جگہ پر ہی ساکن حالت میں رہے گا۔ تو اس طرح دونوں قوتوں کا الجبرائی مجموعہ حاصلہ قوت کہلاتا ہے، جسے نیٹ فورس حاصلہ قوت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس کو ظاہر کرنے کا جو ضابطہ ہے، طریقہ ہے ایف نیٹ، نیٹ فورس از اکول ٹو F1 پلس F2، مگر F2 کو ہم یہاں پر منفی علامت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر F1 کی جو سمت ہے اس کے مخالف میں F2 کی سمت ہے، تو جب مخالف کی سمت آ گئی تو یہاں پر اسے ہم منفی علامت میں ظاہر کریں گے۔ اب کیونکہ یہاں پر ایک مقدار لکھی ہوئی ہے 20 نیوٹن اکائیہ، تو اسے ضابطے میں درج کرتے ہیں۔ حاصلہ قوت نیٹ فورس مساوی ہے 20 جمع مائنس 20 مخالف سمت کی قوت۔ اس طرح نیٹ فورس مساوی ہے 20 میں سے جو ہے 20 کو تفریق کرنے پر جواب کیا ہوگا؟ جی 0۔ تو حاصلہ قوت 0 ہوگی۔ جب حاصلہ قوت 0 ہوگی تو میز کی حرکت بھی ساکن رہے گی۔ چلیے اب حاصلہ قوت کے بارے میں اور مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تمام قوتیں سمت اور مقدار رکھتی ہیں۔ میں دوہرا رہا ہوں، اور پیارے بچوں آپ ان تمام باتوں کو اپنی نوٹ بک میں درج کیجئے اور اسے ذہن نشین کر لیجئے۔ چلیے میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ حاصلہ قوت نیٹ فورس کی تعریف کیا ہوگی؟ تمام قوتیں سمت اور مقدار رکھتی ہیں۔ قوتوں کو جمع کرتے وقت مثبت یا منفی علامتوں کے ذریعے ظاہر کرنا لازمی ہے۔ کیوں لازمی ہے؟ اگر قوتیں ایک ہی سمت میں عمل پیرا ہو تو مثبت علامت سے کام چل جائے گا، لیکن اگر قوتیں مخالف سمت میں عمل پیرا ہو تو یہاں پر منفی علامت کا استعمال کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں پر ایک قوت عمل کر رہی ہے سیدھی جانب دائیں جانب، جسے مثبت علامت کے ساتھ ظاہر کریں گے اور اسے کہیں گے ہم F1۔ اور یہاں درمیان میں ایک جسم ہے جو ساکن حالت میں ہے، اس کے مخالف سمت میں یعنی بائیں جانب میں F2 ایک قوت عمل کر رہی ہے جس کو ہم منفی علامت کے ساتھ ظاہر کریں گے۔ حاصلہ قوت نیٹ فورس مساوی ہے 10 نیوٹن جمع منفی 10 نیوٹن، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح 10 تفریق 10 مساوی 0، تو یہاں پر بھی حاصلہ قوت 0 ہوگی۔ یہاں پر ایک مشغلہ ہے، یہ آپ اپنے طور پر انجام دیجئے۔ بہت سادہ سا مشغلہ ہے۔ آپ کی دونوں انگلیوں میں ایک ربر بینڈ کو اس طرح رکھیے اور اسے پھیلائیے۔ آپ اپنی انگلیوں کے کناروں پر اس ربر بینڈ کی قوت کے اثر کو محسوس کریں گے۔ اب اس کے بعد ربر بینڈ کی تعداد کو ایک کے بعد ایک بڑھاتے جائیے۔ آپ کیا محسوس کریں گے؟ جیسے جیسے آپ ربر بینڈ کی تعداد کو بڑھائیں گے آپ کی انگلیوں پر پڑنے والی قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم اس کو کس طرح ظاہر کریں گے؟ نیٹ فورس مساوی ہے F پلس F۔ یہاں پر پہلے ایک ربر بینڈ کی قوت کو F سے ظاہر کر رہے ہیں اور دوسری ربر بینڈ کی قوت کو بھی F سے، تو اس طرح 2F یونٹس، 2 F کی اکائیاں حاصل ہوئی۔ اور SI نظام میں انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کے نظام میں قوت کی اکائی کیا ہے بچوں؟ نیوٹن۔ پیارے بچوں اگلی سلائیڈ میں آپ کو ایک نیا تصور، ایک نیا عنوان سیکھنا ہے، اس کا نام ہے فری باڈی ڈائیگرام۔ اسے شارٹ فارم میں FBD بھی کہا جاتا ہے، یعنی آزاد مجسم خاکہ۔ اب دیکھتے ہیں یہ آزاد مجسم خاکہ دراصل کیا ہوتا ہے۔
किसी जिस्म पर बैक वक्त एक साथ अमल करने वाली तमाम क़ुव्वतों को ज़ाहिर करने वाले खाके को हम क्या कहेंगे? आज़ाद मुजस्सिम खाका, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD कहते हैं। अब इसे किस तरह से ज़ाहिर करना है वो देखेंगे। आपकी किताब में एक शक्ल है, शक्ल नंबर 15। शक्ल नंबर 15 को जब हम गौर से देखते हैं तो यहाँ पर एक छोटी खिलौना कार है। इस खिलौना कार पर अमल पैरा क़ुव्वतों को हम FBD फ्री बॉडी डायग्राम के ज़रिए से ज़ाहिर करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम को ज़ाहिर करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? X महवर और Y महवर को ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ पर X महवर यानी उफ़क़ी सिमत में अमल करने वाली क़ुव्वतें लिखेंगे और Y महवर पर खड़ी या उमूदी सिमत में अमल करने वाली क़ुव्वतों को लिखेंगे। अब देखते हैं कि इस कार की इंजन की क़ुव्वत जो आगे की जानिब है, इंजन की क़ुव्वत जिसे हम कैपिटल F से ज़ाहिर कर रहे हैं, उसके साथ इसी उफ़क़ी सिमत में और एक क़ुव्वत अमल कर रही है जो इस खिलौना कार के टायर्स पर अमल करती है सड़क के ज़रिए से। इसे कहेंगे हम रगड़ की क़ुव्वत, जिसे स्मॉल f से हम ज़ाहिर करेंगे। अगर सड़क चिकनी हो, मुसत्ता हमवार हो तो रगड़ की क़ुव्वत कम होगी, जबकि सड़क खुरदुरी हो तो रगड़ की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह X महवर पर दो क़ुव्वतें हो गई। पहली क़ुव्वत इंजन की क़ुव्वत कैपिटल F और दूसरी क़ुव्वत रगड़ की क़ुव्वत स्मॉल f। अब इसे यहाँ पर हम X महवर पर लिख देंगे। X महवर की हासिला क़ुव्वत मसावी है कैपिटल F माइनस स्मॉल f। अब आप बताइए यहाँ पर माइनस को क्यों इस्तेमाल करें हम? जी बिल्कुल सही बोले आप। यहाँ पर रगड़ की क़ुव्वत लेफ़्ट साइड है, यानी इंजन की क़ुव्वत के मुखालिफ है, इसलिए हम उसे मनफी अलामत से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये हो गया X महवर का FBD फ्री बॉडी डायग्राम। अब आप देखते हैं Y महवर पर, यानी उमूदी सिमत में, खड़ी सिमत में। अब यहाँ पर दोनों टाइड्स है, तो दोनों टाइड्स पर जो उमूदी क़ुव्वत अमल करेगी उसे हम N1 और N2 से ज़ाहिर करेंगे। उमूदी क़ुव्वत दोनों टाइड्स पर है, N1 और N2, और इसके साथ इस पूरे कार को ज़मीन की कशिश नीचे की जानिब खींच रही है, उसे क्या कहते हैं? क़ुव्वत तजाज़ुब, जिसे हम कैपिटल W से ज़ाहिर कर रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं हम कि N1 और N2 की जो सिमत है ऊपर की तरफ है, जबकि क़ुव्वत कशिश की सिमत नीचे की जानिब। अब ये क़ुव्वतें आपस में मुखालिफ हो गई, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? मुखालिफ यानी मनफी के अलामत से इसे ज़ाहिर करेंगे। Y महवर पर हासिला क़ुव्वत नेट फोर्स ऑफ Y मसावी है N1 प्लस N2। यहाँ पर ये दोनों क़ुव्वतें हैं, क्योंकि एक ही सिमत में है तो इन्हें हम जमा करेंगे, जबकि क़ुव्वत तजाज़ुब मुखालिफ सिमत में है, इसलिए हम उसे तफरीक़ करेंगे। यहाँ पर मनफी अलामत के साथ में कैपिटल W लिखेंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों आप समझ चुके होंगे कि FBD को किस तरह उतारना है, किसी भी जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वतों को X और Y महवर पे किस तरह दायर करना है, आप सीख चुके होंगे। इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। एक किताब में आपको एक सवाल है। पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पर एक जिस्म पर दो क़ुव्वतें अमल कर रही हैं। यहाँ पर एक की मकदार 8 न्यूटन है, जबकि दूसरी की मकदार 10 न्यूटन। इसी जिस्म पर मुखालिफ सिमत में और एक क़ुव्वत अमल कर रही है जिसकी मकदार क्या है? 12 न्यूटन। अब हमको इस जिस्म की हासिला क़ुव्वत को महसूब करना है। नेट फोर्स मसावी है, पहले हम क्या करेंगे? एक जानिब की क़ुव्वतों को जमा करेंगे, उसमें से दूसरी जानिब की क़ुव्वत को तफरीक़ कर देंगे। यहाँ पर पहली तरफ लेफ़्ट साइड में एक क़ुव्वत की मकदार 8 न्यूटन जमा
10 न्यूटन, जुमला हो गया 18 न्यूटन्स। और मुखालिफ सिमत में जो क़ुव्वत है उसकी मकदार 12 न्यूटन है, उसे हम 18 में से 12 माइनस कर दिए तो जवाब आ गया हमारा 6 न्यूटन। इस तरह इस जिस्म की हासिला क़ुव्वत क्या हो गई? 6 न्यूटन्स। दूसरा सवाल है, उसमें आपको दोनों जानिब से एक एक क़ुव्वत अमल कर रही हैं और वो दोनों क़ुव्वतें भी मुखालिफ और मसावी है। अब आपको यहाँ पर ज़ाब्ते में दर्ज करना है 8 न्यूटन जमा मनफी 8 न्यूटन। इस तरह से 8 माइनस 8 मसावी है 0 न्यूटन, यानी इसकी हासिला क़ुव्वत 0 होगी। तीसरा सवाल, यहाँ पर आपको एक ही सिमत में दोनों क़ुव्वतें अमल कर रही है। एक की मकदार 8 न्यूटन है जबकि दूसरी की मकदार 6 न्यूटन। तो एक ही सिमत में इसे हम दोनों को भी जमा कर देंगे, 8 और 6 14 न्यूटन्स। आखिरी सवाल, एक क़ुव्वत ऊपर की जानिब अमल कर रही है, दूसरी क़ुव्वत नीचे की जानिब अमल कर रही है, यानी दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है और उनकी मकदार क्या है? ऊपर की जानिब उम्मूदी क़ुव्वत की मकदार 9 न्यूटन्स और नीचे की जानिब क़ुव्वत तजाज़ुब 8 न्यूटन्स। इस तरह 9 माइनस 8 मसावी है 1 न्यूटन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के सवालात की अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। मुखालिफ सिमत में लगाई जाने वाली क़ुव्वत को मनफी अलामत के साथ ज़ाब्ते में दर्ज करना चाहिए। ये बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए, ठीक है। हासिला क़ुव्वत नेट फोर्स मसावी है F1 प्लस माइनस F2 इज इक्वल टू F1 माइनस F2। अगली स्लाइड पर नज़र डालिए, क़ुव्वतें क्या कर सकती हैं, यानी क़ुव्वत के असरात क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर पहली बात लिखी हुई है, क़ुव्वत किसी जिस्म की हरकत को तब्दील कर सकती है। यानी अगर कोई जिस्म धीमी रफ्तार से हरकत कर रहा है और उसकी क़ुव्वत में इजाफा हुआ तो वो जिस्म तेज़ रफ्तार से हरकत करेगा। अब एक जिस्म है जो तेज़ रफ्तार से हरकत कर रहा है और उसके मुखालिफ में मज़ाहिमती क़ुव्वत अमल हो गई तो वो उसकी रफ्तार धीमी हो जाएंगी। यानी क़ुव्वत जिस्म की हरकत को बदलती है, कम करती है या ज़्यादा करती है। किसी जिस्म के हरकत की सिमत को भी बदल सकती है। क़ुव्वत क्या कर सकती है? किसी जिस्म के हरकत की सिमत को भी बदल सकती है। किसी जिस्म की हालत को तब्दील कर सकती है। क़ुव्वत क्या कर सकती है? हालत को तब्दील कर सकती है। जैसे एक जिस्म है साकिन हालत में, जब उसे क़ुव्वत लगाई जाती है तो वो मुतहरिक हो जाता है। मशग़ला नंबर 11 के तहत एक फुटबॉल प्लेयर बॉल पर किक लगाता है। जब बॉल पर किक लगाता है तो फुटबॉल पर होने वाले असरात को यहाँ पर हम एक वीडियो के ज़रिए से भी देख सकते हैं। जब फुटबॉल को किक लगाया जाता है तो उसकी हालत तब्दील होती है, यानी पहले हालत सुकून में था, अब वो मुतहरिक हो गया। और जब फुटबॉल को दोबारा उसी सिमत में दोबारा किक लगाया जाता है तो वह और मज़ीद आगे की तरफ हरकत करता है, यानी उसकी हरकत में तब्दीली होती है। और जब फुटबॉल को अपने पैर से रोका जाता है तो मुतहरिक फुटबॉल अब रुक जाता है, साकिन हालत में आ जाता है। या फिर अगर फुटबॉल की रफ्तार तेज़ हो तो वो अपनी सिमत भी तब्दील करता है। तो यहाँ पर हम 3 बातें देखे हैं। यहाँ पर हमने 3 बातें देखी। नंबर 1, साकिन फुटबॉल पर किक लगाने पर वो मुतहरिक हो गया और मुतहरिक फुटबॉल पर दोबारा किक लगाने पे उसकी रफ्तार में इजाफा हुआ। और तीसरी बात, जब फुटबॉल की रफ्तार को पैर से रोका गया तो वो दोबारा साकिन हालत में आ गया, या अगर उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो तो साकिन हालत के बजाय वो अपनी सिमत भी तब्दील कर देगा। मशग़ला नंबर 12 है। यहाँ पर आपको एक कैरम के बोर्ड पर कुछ काइंस को स्ट्राइकर से मारना है। ये तो आपका पसंदीदा मशग़ला रहा होगा, मगर यहाँ पर इस मशग़ले के ज़रिए हम क़ुव्वत के तहत जो बातें हम सीख रहे हैं उसे समझना है। जब कैरम के कॉइन्स को स्ट्राइकर से मारा जाता है तो साकिन कॉइन मुतहरिक हो जाती है। यानी जब कॉइन साकिन थी, स्ट्राइकर से मारने पर वो मुतहरिक हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि
जो काइन जो डायरेक्शन में थी उसकी डायरेक्शन या सिमत बदल गई। ठीक है, तो इस तरह पहली बात हरकत, दूसरी बात हरकत की सिमत, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर समझ चुके हैं। क़ुव्वत के दिगर असरात, अजसाम की शक्ल पर क़ुव्वत के असरात क्या क्या होते हैं वो देखेंगे हम। क़ुव्वत ना सिर्फ जिस्म की हालत हरकत बदल सकती है बल्कि इस जिस्म की शक्ल सूरत में भी तब्दीली कर सकती है। जदवल नंबर 3 आपकी किताब में दिया गया है। यहाँ पर आपको क़ुव्वत के तहत जो तब्दीलियाँ वाक़ हो रही है उसकी कुछ मिसालें दी गई हैं और वो तब्दीली की नौइयत यहाँ पर लिखना है। अगर तब्दीली मुस्तकिल है तो परमानेंट पी लिखना है और अगर तब्दीली आर्जी है तो आपको टी टेम्पररी बतलाना है। तो यहाँ पर देखते हैं पहली जो मिसाल है, पढ़िए क्या है वो, रबर बैंड को फैलाना। जब हम रबर बैंड को फैलाते हैं तो दोबारा जैसे रबर बैंड को छोड़ते हैं तो वो अपनी पुरानी हालत में, असली हालत में वापस आ जाता है, यानी तब्दीली क्या हो गई है, टेम्पररी, आर्जी। दूसरा स्पंज को दबाना, ये भी तब्दीली टेम्पररी है, आर्जी है। तीसरी तब्दीली है कागज़ फाड़ना। जब एक मरतबा कागज़ को फाड़ दिया जाता है तो दोबारा अपनी असली हालत पर वापस नहीं आता, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, परमानेंट, मुस्तकिल। चाक को तोड़ना, जी ये भी मुस्तकिल। रोटी बेलना, रोटी बेलना, जब हम रोटी बेलते हैं तो रोटी की हालत को दोबारा से मरोड़ के फिर हम उसे वापस अपनी असली हालत पे ला सकते हैं। तो इस तरह रोटी बेलना एक आर्जी तब्दीली है। शीशा तोड़ना, ये जी बिल्कुल सही, मुस्तकिल तब्दीली है। प्यारे बच्चों, अब हम एक नया उन्वान पढ़ेंगे, तमासी रकबे के लिहाज से क़ुव्वत के असरात में तब्दीली। तमासी रकबा क्या होता है? जो रकबा, किसी भी जिस्म का जो रकबा किसी चीज़ से मस किया हुआ होता है, कंटैक्ट में होता है, टच किया हुआ होता है, उसे हम क्या कहेंगे, तमासी रकबा। ठीक है, जब आप इरेज़र से मेटते हैं तो जितना हिस्सा कागज़ से मस होगा वो उसका तमासी रकबा होगा। तो यहाँ पर स्लाइड पर नज़र डालिए, तमासी रकबे के लिहाज से क़ुव्वत के असरात में तब्दीली। अपनी पेंसिल की नोक को अपनी हाथ की हथेली पर हल्के से टच कीजिए, आप क्या महसूस करेंगे? चूँकि पेंसिल की नोक का तमासी रकबा यानी उसकी नोक बारीक है, इसलिए आपको कुछ तकलीफ़ महसूस होगी। जबकि उसी पेंसिल को पलटा दीजिए और उसका दूसरा हिस्सा जो कि मोटा हिस्सा है या उसका तमासी रकबा ज़्यादा है, उसे आप अपने हथेली पर टच कीजिए, आपको पहले जितनी तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। यानी तमासी रकबे के तहत क़ुव्वत के असर में आप तब्दीली देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर जो खुली अपना बोझ उठाने के लिए हमारी मदद करते हैं, वो लोग अपने सर पर पगड़ी बांधते हैं। आपको पता है ये क्यों बांधते हैं? जी, क्योंकि ये पगड़ी का जो तमासी रकबा है वो ज़्यादा होने की वजह से सूटकेस या जो भी संदूक का जो बोझ है, वो बोझ से जो पड़ने वाली क़ुव्वत है उसका असर थोड़ा कम होता है और वो खुली आसानी से बोझ को उठाकर ले जा सकते हैं। इसी तरह हम जो बैग इस्तेमाल करते हैं उसकी हैंडल्स पर देखिए, आप बहुत सारे बैग, स्कूल बैग हो सकता है आपका, लंच बैग है, हैंड पर्स है या जो है लगेज बैग है, इसके हैंडल्स पर देखिए यहाँ पर एक मोटा सा कुशन लगा होता है ताकि आपके हथेलियों पर इसके क़ुव्वत का असर ज़्यादा ना पड़े। इस तरह हम ये बात को समझ चुके हैं कि जब तमासी रकबे में कमी वाक़ होती है तब क़ुव्वत के असरात में इजाफ़ा होता है। यानी पेंसिल की नोक तमासी रकबा कम था, क़ुव्वत का असर ज़्यादा हुआ। और इसी तरह जब तमासी रकबे बढ़ जाता है तो क़ुव्वत में कमी वाक़ होती है, यानी क़ुव्वत के असर में कमी वाक़ होती है। यहाँ पर तमासी रकबा बढ़ गया, इसलिए क़ुव्वत के असर में कमी वाक़ हुई। आइए प्यारे बच्चों,
और एक नया उन्वान हम यहाँ पर समझते हैं, वो क्या है? दबाव, प्रेशर। इकाई रकबे की सतह पर उमूदन अमल करने वाली क़ुव्वत को दबाव कहते हैं। दबाव को पी, कैपिटल पी से दायर किया जाता है और उसको मालूम कर क़ुव्वत, फोर्स बटा हुआ रकबा, एरिया। अब यहाँ पर एक हिसाबी सवाल है। एक शय का सतही रकबा 20 मुरबा मीटर है और इस पर अमल करने वाली क़ुव्वत 10 न्यूटन है, तब दबाव क्या होगा? दबाव का ज़ाब्ता हमको मालूम है, क़ुव्वत बटा हुआ रकबा। दबाव 10 न्यूटन क़ुव्वत है और रकबा 20 मुरबा मीटर है, तो इस तरह 10 बटा हुआ 20 मसावी है 1 बटा हुआ 2, यानी 0.5 न्यूटन मुरबा मीटर इसका दबाव होगा। यहाँ पर एक शक्ल आपको स्लाइड में दिखाई जा रही है। अगर तमासी रकबा कम हो तो आयद होने वाला दबाव ज़्यादा होगा। अगर तमासी रकबा ज़्यादा हो तो आयद होने वाली क़ुव्वत इतने ही रकबे में फैल जाती है और यूँ दबाव कम हो जाता है। अब आपको दबाव और रकबे के तहत एक मशगला आपकी किताब में दिया गया है, उसे हम यहाँ पर वीडियो के ज़रिए से देखेंगे। यहाँ पर ट्रे में चूने का सफ़ूफ़ है और एक वज़नी लकड़ी के कुंदे को खड़ी हालत में कुछ बुलंदी से ऊपर से छोड़ा जा रहा है और हम देख रहे हैं कि क़ुव्वत के तहत उसका जो तमासी रकबा है, तो तमासी रकबे का असर यहाँ पे ये हुआ कि एक निशान बन गया, गहरा गड़ा बन गया, यानी ये थोड़ा ज़्यादा गहरा है, यानी इस पर क़ुव्वत का असर ज़्यादा हुआ। इसी तरह जब हम किसी लकड़ी के कुंदे को उफ़क़ी हालत में मसावी बुलंदी से छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि तमासी रकबा ज़्यादा होने की वजह से जो चूने के सफ़ूफ़ का जो गड़ा है उसकी डेप्थ, उसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, यानी तमासी रकबा ज़्यादा होने से क़ुव्वत का असर कम हो गया। अब यादा करते हैं, अगर किसी शय को ऊपर की जानिब से फेंका जाए तो एक ऐसी क़ुव्वत इस शय पर काम करेगी जो इसे ज़मीन की तरफ वापस लाएगी। इसी क़ुव्वत को क़ुव्वत तजाज़ुब या क़ुव्वत सक़ल कहते हैं। दूसरा नुक्ता है, मुखालिफ क़ुतुब एक दूसरे को मस्क किए बग़ैर कशिश करते हैं और मुशाबा क़ुतुब एक दूसरे को मस्क किए बग़ैर दिफा करते हैं। ये कशिश और दिफा की क़ुव्वतें मक़नातीसी क़ुव्वतें कहलाती है। मक़नातीसी क़ुव्वत एक मैदानी क़ुव्वत है। बरक़ी बार रखने वाले जिस्म की वो क़ुव्वत जो किसी बरक़ी बार या गैर बरक़ी बार वाले अजसाम को मुतासिर करती है, बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत कहलाती है। बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत भी मैदानी क़ुव्वत है। तमाम क़ुव्वतें सिमत और मक़दार रखती हैं। क़ुव्वतों को जमा करते वक्त मुस्बित या मनफी अलामतों के ज़रिए ज़ाहिर करना लाजमी है। किसी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम क़ुव्वतों का अलजिब्राई मजमुआ हासिला क़ुव्वत नेट फोर्स कहलाता है। किसी जिस्म पर बैक वक्त अमल करने वाली तमाम क़ुव्वतों को ज़ाहिर करने वाले खाके को आज़ाद मुजस्सिम खाका, फ्री बॉडी डायग्राम FBD कहते हैं। क़ुव्वत ना सिर्फ जिस्म की हालत हरकत बदल सकती है बल्कि इस जिस्म की शक्ल सूरत भी तब्दील कर सकती है। यह तब्दीली आर्जी या मुस्तकिल हो सकती है। तब्दीली की नौयत का इन्हिसार मादे की बनावट और क़ुव्वत के असर पर होता है। SI निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई न्यूटन है। इकाई रकबे की सतह पर उमूदन अमल करने वाली क़ुव्वत को दबाव कहते हैं और दबाव की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जमात अश्तुम की फ़िज़िकल साइंस का पहला चैप्टर फोर्स या क़ुव्वत का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप समझ चुके होंगे। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया।
پیارے بچوں، آج ہم اس ڈیجیٹل کلاس میں نہم جماعت کی تیسری یونٹ جو طبیعت سے ہے، حرکت کے کلیات کے تعلق سے فہم حاصل کریں گے۔ تو بچوں آئیے اب ہم یہ پہلی تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ تصویر مشہور فلاسفر ارسطو کی ہے۔ مشہور فلاسفر ارسطو کے مطابق زمین پر کسی جسم کی طبعی حالت سکون ہے، اور اس کا خیال تھا کہ حرکت کرنے والے اجسام بالآخر حالت سکون میں آ جاتے ہیں۔ تو بچوں آپ نے ارسطو کی تصور کو سمجھا۔ بچوں اب ہم دوسری تصویر دیکھتے ہیں۔ ہاں بچوں، یہ دوسری تصویر فلاسفر گلیلیو کی ہے، جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کوئی متحرک جسم حالت حرکت میں رہے گا تاوقت کہ اس پر کوئی بیرونی قوت عمل نہ کرے۔ اس نظریے نے جدید سائنس کی بنیاد ڈالی۔ ارسطو اور گلیلیو کے پیش کردہ بنیادی نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سر ایزاک نیوٹن نامی سائنسداں نے چند کلیات کو پیش کیا، جس کو حرکت کے کلیات یا نیوٹن کے حرکت کے کلیات کہا جاتا ہے۔ تو بچوں آئیے اب یہ ہم تیسری تصویر دیکھتے ہیں۔ ہاں بچوں، یہ تصویر سر ایزاک نیوٹن کی ہے۔ ارسطو اور گلیلیو کے پیش کردہ بعض بنیادی نظریات کے اساس پر سر ایزاک نیوٹن نے حرکت کے متعلق 3 کلیات پیش کیے۔ ان سے قوت اور حرکت میں تبدیلی کے مابین تعلق واضح ہوتا ہے۔ یہ نیوٹن کے کلیات حرکت ہے۔ تو بچوں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ارسطو اور گلیلیو کے پیش کردہ بنیادی نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلسلہ وار تجربات کے بعد سر ایزاک نیوٹن نے چند کلیات میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ بچوں اب ہم یہ تیسری تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سر ایزاک نیوٹن کی ہے۔ ارسطو اور گلیلیو کے پیش کردہ بعض بنیادی نظریات کے اساس پر سر ایزاک نیوٹن نے حرکت کے متعلق 3 کلیات پیش کیے۔ ان سے قوت اور حرکت میں تبدیلی کے مابین تعلق واضح ہوتا ہے۔ یہ نیوٹن کے کلیات حرکت کہلاتے ہیں۔ نیوٹن کے کلیات حرکت کو یا نیوٹن کے پہلے کلیے کو سمجھنے سے پہلے قوت کے تعلق سے سمجھیں گے۔ تو بچوں قوت دراصل 2 اقسام کی ہے۔ پہلا متوازن قوت اور دوسرا غیر متوازن قوت۔ تو بچوں اب ہم متوازن قوت کے بارے میں جانیں گے اور یہ سلائیڈ کا مشاہدہ کریں گے۔ پیارے بچوں اب ہم متوازن قوت کے بارے میں جانیں گے اور یہ سلائیڈ دیکھیں گے۔ متوازن قوت کسی جسم پر اگر 2 مساوی قوتیں مخالف سمت سے عمل کریں اور جسم اپنا مقام تبدیل نہ کرتا ہو تو یہ متوازن قوت ہوگی۔ آپ مشاہدہ کریں گے کہ دائیں اور بائیں جانب قوت 100 نیوٹن لگانے سے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ یہی متوازن قوت ہے۔ تو بچوں آپ نے شکل میں دیکھا کہ دائیں اور بائیں جانب جب یکساں قوت 100 نیوٹن کی لگائی گئی تو جسم حرکت نہیں کرے گا۔ تو پیارے بچوں اب ہم غیر متوازن قوت کی تعریف یوں کریں گے۔ غیر متوازن قوت سے مراد ایک قوت دوسری قوت کی مخالفت نہیں کرتی اور جسم کے مقام میں تبدیلی کی وجہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر دائیں جانب 100 نیوٹن کی قوت لگائی جائے اور بائیں جانب 50 نیوٹن کی قوت صرف ہو تو یہ 2 قوتیں متوازن قوتیں کہلائیں گی۔ تو پیارے بچوں اب ہم نیوٹن کے پہلے کلیے یا جمود کے کلیے کو سمجھیں گے۔ ایک جسم حالت سکون میں ہی رہے گا یا پھر ہموار رفتار سے ہی حرکت کرے گا تاوقت کہ کوئی غیر متوازن قوت اس پر عمل نہ کرے، یا اشیاء کا فطری رجحان جس کے سبب وہ اپنی حالت کی تبدیلی کی مزاحمت کرتے ہیں جمود کہلاتا ہے۔ اس لیے نیوٹن کے پہلے کلیے کو جمود کا کلیہ بھی کہتے ہیں۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں جمود کیا ہے؟ چلیے ایک اور سلائیڈ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اشیاء کا فطری رجحان جس کے سبب شے اپنی حالت کی تبدیلی کی مزاحمت کرتے ہیں جمود کہلاتا ہے۔ بچوں جمود کو چند اور مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے۔ تو بچوں آئیے اس سلائیڈ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پہلا، موٹر بائک جو حالت حرکت میں ہے، اگر کچھ قوت سے
روکنا چاہے تو نہ روک پائیں گے۔ دوسری مثال، کسی وزنی صندوق کو جو حالت سکون میں ہو کچھ قوت لگا کر پیر سے ڈھکیلنے پر صندوق تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے رک جائے گا۔ ان مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اشیاء جیسی حالت میں ہوں گی ویسی ہی حالت برقرار رکھنا چاہیں گی۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ سلائیڈ کی پہلی تصویر میں جب ایک موٹر بائک حالت حرکت میں ہے اسے روکنا چاہیں تو نہ روک پائیں گے، اور ایک صندوق جو وزنی ہے اس کو پیر سے قوت لگانے پر وہ کچھ فاصلہ طے کر کے رک جائے گا۔ یعنی اس بات سے ہم واقف ہو چکے ہیں اشیاء جو حالت میں ہے وہی حالت کو برقرار رکھنا چاہے گی۔ تو بچوں، جمود کو سمجھنے کے بعد نیوٹن کا پہلا کلیہ یا جمود کے کلیے کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ تو ایک بار پھر جمود کی تعریف یوں کی جاتی ہے جو نیوٹن کا کلیہ بھی کہلاتا ہے۔ آئیے سلائیڈ کا مشاہدہ کریں۔ نیوٹن کا پہلا کلیہ، ایک جسم حالت سکون میں ہی رہے گا یا پھر ہموار رفتار سے ہی حرکت کرے گا تا وقت کے کوئی غیر متوازن قوت اس پر عمل نہ کرے، یا اشیاء کا فطری رجحان جس کے سبب وہ اپنی حالت کی تبدیلی کی مزاحمت کرتے ہیں جمود کہلاتا ہے۔ اس لیے نیوٹن کے پہلے کلیے کو جمود کا کلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں، اب ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے۔ ایک لڑکا جو ربر کی گیند حالت سکون میں ہے اس کو لے کر ہاتھ کی قوت لگا کر جب پھینکتا ہے تو وہ حالت حرکت میں آ جائے گی۔ اسی طرح ایک فٹ بال جو حالت سکون میں ہے اس کو پیر کی قوت لگا کر جب حرکت دی جاتی ہے تو وہ حالت حرکت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک موٹر بائک جو حالت سکون میں ہے ایکسیلیٹر کے ذریعے جب قوت لگائی جاتی ہے تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ بچوں، آئیے اب ہم اور ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس سے ساکن جمود کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے درکار اشیاء ہیں: ایک 5 کا سکہ، 20 کاغذ، بیکر یا کانچ کا گلاس لے سکتے ہیں۔ اب ہم بیکر پر 20 کاغذ رکھیں گے اور 20 کاغذ کے درمیان میں سکہ رکھیں گے، اور 20 کاغذ کو تیزی سے اپنی انگلیوں کی مدد سے ایک لخت کھینچ دیں گے جس سے سکہ عموداً گلاس میں گر جائے گا۔ بچوں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہ دراصل جمود کی وجہ سے سکہ گلاس میں گر گیا۔ بچوں، ابھی ہم نے ساکن جمود کو سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو کا مشاہدہ کیا کہ کس طرح ایک قوت لگا کر جب 20 کاغذ کو کھینچا جاتا ہے تو سکہ بیکر میں گر جاتا ہے۔ تو ساکن جمود کو سمجھنے کے لیے اور چند ویڈیوز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بچوں، آئیے اب اس سوال کا جواب دیجیے۔ بیرونی قوت کے عمل سے 20 کاغذ ہٹ جائے گا لیکن سکہ بیکر میں گر جائے گا، کیوں؟ جواب: کیونکہ جمود کے کلیے کی بنا پر سکے میں کمیت پائی جاتی ہے اور سکہ حالت کی تبدیلی کی مزاحمت کرتا ہے، نتیجتاً سکہ کاغذ کے ساتھ حرکت نہیں کرے گا اور تجاذبی قوت کی وجہ سے بیکر میں گر جائے گا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سکہ تجاذبی قوت کی وجہ سے بیکر میں گر گیا۔ تو بچوں، اب آئیے ایک اور ویڈیو کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیرم بورڈ پر جب کائنز ایک دوسرے پر جمی ہوئی ہیں تو اسٹرائکر سے جب مارا جاتا ہے تو نچلی کائنز کی قطار سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ دراصل نچلی کائن رگڑ والی قوت کا اطلاق کرتی ہے اور یہ قوت دوسرے کائنز کو خطا کرنے میں یا خارج کرنے میں
ناکافی ہوتی ہے۔ اب ہم روزمرہ زندگی میں جمود کو چند اور مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کار چلاتے وقت کیوں سیٹ بیلٹ ضروری ہے؟ اگر سیٹ بیلٹ نہ لگائیں تو اچانک بریک لگانے کی صورت میں آپ کا جسم جمود کی حالت کو برقرار رکھنا چاہے گا اور آپ آگے کی جانب جھک جائیں گے۔ تو بچوں، جمود کو سمجھنے کے لیے اور ایک سلائیڈ کا مشاہدہ کریں۔ بچوں، جمود کو سمجھنے کے لیے اور ایک سلائیڈ کا مشاہدہ کریں۔ جب بس کے اوپر سامان رکھا جاتا ہے تو اس کو رسی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم سامان کو رسی سے نہ باندھیں گے تو اچانک بس رک جانے کی وجہ سے سامان سامنے کی جانب جمود کی وجہ حرکت کرے گا اور نیچے گرنے کے امکانات ہوں گے۔ بچوں، ہم اب جمود کے اقسام کے بارے میں جانیں گے اور یہ سلائیڈ کا مشاہدہ کریں گے۔ جمود کے دو اقسام ہیں، ایک ساکن جمود، دوسرا متحرک جمود۔ ساکن جمود، ساکن جمود میں کوئی بھی شے حالت سکون میں ہوگی اور ویسے ہی رہے گی جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت عمل نہ کرے۔ متحرک جمود، اگر کوئی جسم پہلے ہی سے حرکت کر رہا ہو تو اسی رفتار کے ساتھ متحرک رہے گا جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت نہ لگائی جائے۔ بچوں، اب ہم ساکن جمود اور متحرک جمود کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا مشاہدہ کریں گے۔ اگر ایک شخص بس میں سفر کر رہا ہے اور بس اچانک حرکت میں آ جائے تو شخص کا جھکاؤ پیچھے کی جانب ہوگا۔ تو وہ کس طرح ہوگا؟ ہم یہاں دیکھیں، یہ بس جو حالت سکون میں ہے اور یہ شخص جو ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر بس کے اچانک حرکت میں آنے کی وجہ سے شخص کا جھکاؤ اس طرح پیچھے کی جانب ہوگا۔ دوسری صورت میں کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ بس ہے اور یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، تصور کریں، اور بس متحرک ہے، حرکت میں ہے اور اچانک بریک لگ جائے تو ایسی حالت میں کیا ہوگا، ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بس اس طرح سے حرکت میں ہے اور اچانک بریک لگ جا رہا ہے تو شخص کا جھکاؤ آگے کی جانب ہوگا۔ حالت کی تبدیلی کی مخالفت کرنا جمود کہلاتا ہے۔ اسی کو ہم نیوٹن کا پہلا کلیہ یا جمود کا کلیہ بھی کہتے ہیں۔ بچوں، اب ہم جمود اور کمیت کے بارے میں جانیں گے۔ جمود دراصل کسی شے کی وہ خاصیت ہوتی ہے جو حالت حرکت کی تبدیلی کی مزاحمت کرتی ہے، اور یہ خاصیت تمام اجسام میں پائی جاتی ہے، جبکہ کمیت دراصل جمود کا پیمانہ ہے۔ کسی شے کی کمیت جتنی زیادہ ہوگی، جمود کی خاصیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اگر کسی شے کی کمیت کم ہوگی، جمود کی خاصیت بھی کم ہوگی۔ بچوں، اب ہم جمود اور کمیت کو سمجھنے کے لیے ایک مشغلہ انجام دیتے ہیں جو آپ کو سلائیڈ کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے۔ بچوں، سلائیڈ دیکھیں۔ دو مستطیلی لکڑی کے کندے لیجئے جو مختلف کمیت کے ہوں، انہیں خط مستقیم میں فرش پر رکھیے اور لکڑی کی ایک پٹری سے دونوں لکڑی کے کندوں کو ایک ساتھ ڈھکی لیے۔ اب کون سا کندہ آگے تک پہنچتا ہے؟ آپ مشاہدہ کریں گے کہ چھوٹے کندے میں کمیت کم ہوگی، لہذا وہ کندہ آگے تک پہنچتا ہے۔ اس مشاہدے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی جسم کی کمیت جتنی زیادہ ہوگی، وہ جسم حالت کی تبدیلی کی خلاف اتنی ہی زیادہ مزاحمت کرے گا۔ چلیے بچوں، جمود کو سمجھنے کے لیے ایک اور سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ مسئلہ، کمیت یم رکھنے والے ایک جسم افقی فرش پر
رکھتے ہوئے اسے افقی سمت میں 10 نیوٹن کی مسلسل قوت سے ڈھکیلا جا رہا ہے تاکہ یہ یکساں رفتار سے حرکت کرے۔ ایف بی ڈی کا خاکہ بنائیے۔ خاکہ ایسا ہو کہ کسی وقت جسم پر عمل کرنے والی تمام قوتوں کو ظاہر کرتی ہو۔ بی، رگڑ کی قوت قدر کیا ہوگی؟ مسئلے کا حل۔ تو شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں فری باڈی ڈائیگرام جسے کہیں گے آزاد جسم خاکہ، جہاں پر کیپٹل ایف ہے جو قوت لگائی جا رہی ہے، اسمال ایف جو جسم سے رگڑ کی قوت ہے، اور ڈبلیو جسم کا وزن ہے، اور جو نیچے سے جو قوت لگائی جا رہی ہے وہ ین ہے۔ دیا گیا ہے کہ جسم میں خاص رفتار سے حرکت کر رہا ہے، لہٰذا افقی اور عمودی سمتوں میں جسم پر عمل کرنے والی حاصلہ قوت 0 ہوگی۔ افقی سمت میں عمل کرنے والی قوت رگڑ کی قوت اسمال ایف ہوگی۔ اس جسم پر جو قوت لگائی جا رہی ہے وہ کیپٹل ایف ہے۔ ایف نیٹ مساوی ہے 0، کیپٹل ایف پلس آف مائنس اسمال ایف از ایکولس ٹو 0، کیپٹل ایف از ایکولس ٹو اسمال ایف، لہٰذا رگڑ کی قوت 10 نیوٹن ہوگی۔ تو پیارے بچوں، نیوٹن کا پہلا کلیہ اور جمود کے کلیے کے تعلق سے اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے۔ تو بچوں، اب ہم نیوٹن کے دوسرے کلیے کو سمجھیں گے۔ بچوں، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ موبائل فون ہے۔ موبائل فون پر جب میں ہاتھ کی قوت لگاتا ہوں تو یہ حرکت کی سمت آگے بڑھتا ہے۔ بچوں، پھر میں دہراتا ہوں، یہ موبائل فون ہے جس کو ہاتھ کی قوت لگانے سے یہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طرح بچوں، ایک میرے پاس وزنی کتاب ہے۔ اس وزنی کتاب کو جب میں ہاتھ کی قوت لگاتا ہوں یہ قوت کی زیر اثر قوت کی سمت میں آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ تو بچوں، اس مشغلے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شے کی کمیت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی ہی کم رفتار سے حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ رفتار کی تبدیلی کو اسرا کہا جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی کی چند مثالوں کے ذریعے نیوٹن کے دوسرے کلیے کو سمجھیں گے۔ فرض کیجئے کہ ایک کرکٹ گیند اور بیڈمنٹن کی گیند آپ کے جسم سے ایک ہی رفتار سے ٹکراتی ہیں تو کیا ہوگا؟ کون سی گیند سے آپ کو زیادہ مار پڑے گی؟ تو بچوں، ظاہر سی بات ہے، بالکل صحیح سوچا آپ نے کہ کرکٹ گیند کی کمیت زیادہ ہوگی، اس لیے آپ کو کرکٹ گیند سے زیادہ مار پڑے گی۔ تو بچوں، آئیے اب ایک دوسری مثال پہ غور کرتے ہیں۔ ایک بندوق سے نکلی ہوئی گولی جو تیز رفتار سے حرکت کرتی ہوئی دیوار کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو بچوں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کئی بار سینما میں یا فلم میں جب بندوق سے گولی چلائی جاتی ہے تو اگلے والے کے جسم پر پیوست ہو جاتی ہے اور وہیں وہ شخص ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بندوق کی تیز رفتار کی وجہ سے دیوار کو زیادہ نقصان ہوگا۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم نیوٹن کے دوسرے کلیے کو تیسری مثال کے ذریعے سمجھیں۔ اگر ٹرک اور سائیکل کے اجسام سے جب دیوار کو ٹکر دی جاتی ہے تو ٹرک کی ٹکر سے دیوار کو زیادہ نقصان ہوگا۔ کیوں نہ ہو بچوں؟ کیونکہ ٹرک کی کمیت زیادہ ہے، اس لحاظ سے دیوار کو زیادہ نقصان ٹرک کی ٹکر سے ہوگا۔ تو بچوں، ان تصورات کو سائنسی اصطلاح میں معیار حرکت کہا جائے گا، جسے ہم مومنٹم کہتے ہیں، جس کو پی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا مثالوں سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ معیار حرکت دراصل شے کی رفتار اور شے کی کمیت پر منحصر ہوتی ہے۔ تو بچوں، معیار حرکت
को सर आइजैक न्यूटन ने इस तरह से तारीफ की है। अब ये स्लाइड देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने म्यार हरकत के ताल्लुक़ से रोज़मर्रा ज़िंदगी की चंद मिसालों पर गौर किया। अब हम बहवाले न्यूटन म्यार हरकत के बारे में मुशाहिदा करेंगे। सर आइजैक न्यूटन ने इस अमर की तशरीह के लिए कमियत बहालत हरकत की इस्लाह वाज़े की है, जो दरअसल म्यार हरकत P है। किसी जिस्म का म्यार हरकत कमियत यम और रफ्तार V का हासिल ज़रब होता है। म्यार हरकत मसावी है कमियत ज़रब रफ्तार, P मसावी है यम V। रफ्तार चूँकि सिमती मकदार है, इसलिए म्यारी हरकत भी सिमती मकदार होगी। म्यारी हरकत की इकाई एसआई निज़ाम में न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। प्यारे बच्चों, अब हम इस स्लाइड के ज़रिए न्यूटन के दूसरे क्रिया की तारीफ देखेंगे। किसी जिस्म की म्यार हरकत की तब्दीली की शरह रास्त मुतनासिब होती है इस पर अमल करने वाली कुल क़ुव्वत के, और ये हासिला क़ुव्वत की सिमत अमल करती है। तो बच्चों, आपने न्यूटन के पहले कुलिये और दूसरे कुलिये के बारे में अच्छी तरह वाक़फ़ियत हासिल की। बच्चों, आइए एक नज़र हम आज के सीखे हुए चंद नुकात पर डालते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने न्यूटन के पहले और दूसरे कुलिये के ताल्लुक़ से अच्छी तरह वाक़फ़ियत हासिल की। तो बच्चों, अब आइए कि हम आज के सीखे हुए चंद नुकात पर नज़र डालते हैं। न्यूटन के हरकत के मुताबिक 3 अहम कुलियात पेश किए। इन कुलियात से क़ुव्वत और हरकत में तब्दीली के माबैन ताल्लुक़ वाज़े होता है। न्यूटन के पहले कुलिये को जमूद का कुलिया भी कहा जाता है। मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वत के दरमियान फ़र्क। जमूद के अक़साम। न्यूटन का पहला कुलिया और इसका इतलाक़। शय की कमियत दरअसल जमूद का पैमाना है। म्यार हरकत का इन्हिसार शय की कमियत और रफ्तार पर होता है। न्यूटन के दूसरे कुलिये की वजाहत। तो बच्चों, आज हमने न्यूटन के पहले और दूसरे कुलिये के ताल्लुक़ से अच्छी तरह वाक़फ़ियत हासिल की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन कुलियात को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो बच्चों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर एक नए उन्वान के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। తోటి బుర్రవాద్యం. ఇది తంత్రివాద్యం. దీన్ని వాయించే వారిని తోటిలనే కొర్రాజులు, పాండవుల వారు అని అంటారు. వీరే ఆదిలాబాద్లో కిక్రి వాద్యం, కిన్నెర వాద్యం వాయిస్తారు. తోటీల వాద్యం ఏక్తార వంటిది. బుర్రవీణ కంటే చిన్నది. కర్రకి కట్టిన బుర్ర మీద అందెలతో వాయిస్తూ పాడతారు. దీనికి చిన్న మద్దెల తోడుగా పలుకుతుంది. ఈ వాద్యం వాయించే వారిని వేళ్ల మీద లెక్కించవచ్చు. వాద్యాలు కూడా 1-2 ఉన్నాయి. ఆ గాంధారి పచ్చి విధునాలు పెడితే పల వింటి పోతరయ్యా పేర్చిన కుర్రాలోయి. వెరబోతే గింజలేక నేనైనా వాద్యమోయి. పచ్చి విధునాలు పెడితే పాండవులు పలవించిపోతాడు గాంధారి. ఎండి గుళ్ళ పొయ్యి మీద పైడి మంగళ పెట్టింది. వెర్రగా కాలి నుంచి 3 సొల కొరలు మంగళముల పోసింది. కొన్ని ధోరణ కొన్ని మాడి బసిబెగ్గులు 3 తెలివించి చాటు చలబోసి ఏ రార కొడుక పాండు వా భీమా చాలు కొంగు పరువన్నదయ్యా కొలసి కొంగుల పోసి నాదోయి.
కొలసి కొంగుల పోసి నాదయ్యా. ఆ గాంధారి 3 సులకొరలు కొలిసి కొంగుల పోసింది. భీమా ముండే కట్టుకుని పొయ్యి వస్తా పెద్దబరుడు, నాయన వీటికి నాగులు వస్తున్నాయి, పెచ్చులు వస్తున్నాయి. అమ్మా ఏ పటి నాగులు ఎప్పటి పెచ్చులు చెప్పవే. మొదలు పెడితే 3 సులకొరలు, 3 తవ్వలు, 3 మానికలు, 3 మానికలకు 3 అడ్డలు, 6 గుంచాలు, 6 12 గుంచాలు, 24 గుంచాలు, 48 96 గుంచాలు. పంట పండే వరకు చిన్ని ముద్దుల కృష్ణయ్య ఆదరించి కాపాడుమా. నిత్యము నీ దుఃఖ పూజరా అనే దినము నా దుఃఖ భజనరా. దయలుంచుమా దరిదే చుమా నా చిన్ని ముద్దుల కృష్ణయ్య దయలు. మచ్చయుతరులాకిది దయలుంచుమా దరిదే చుమా నా చిన్ని ముద్దుల కృష్ణయ్య దయలుంచుమా దరిదే చుమా. నా పేరు సోమ సారయ్యను. మా గ్రామము ముద్దులూరు, దుగ్గోండి మండలము. మేము పాండవ మహాభారతం చెప్పేవాళ్ళము. నాయక పూలను ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గర పోయి వాళ్ళతో కథ చెప్పి వాళ్ళని మెప్పించి మేము తేగ పడుకొని వచ్చి ఇంటికి వస్తే జీవిస్తాము. ఇట్లా ప్రోగ్రాంలు వస్తే ప్రోగ్రాంలు పిలిస్తే సార్ పిలిస్తే పోయి ప్రోగ్రాంలు చేస్తాము. మా పిల్లలు కూడా కథలు చెప్తలేరు, కథ బంద్ అయిపోయింది. నా వరకే నేను 45 సంవత్సరాల నుంచి కథ చెప్పుకుంటా పోషకర్తం చేసుకుంటా జీవిస్తున్నాం. మేము ఇక్కడ వంశపరంగా మా పెద్దలు, మా తాత, మా నాయన చెప్పితే ఇది ఆ కథ నేర్చుకుని ఈ బుర్ర బట్టి కథ చెప్తున్నాం. ఇది కగ్గగొట్టం, ఇదిగో ఇది టేకుది, ఇగో జిట్రేకి బుద్ధిమంతులు అంటారు దీన్ని. కిరీటము, జిట్రేకిది కిరీటము. ఇక ఆన్పకాయ, టోఫన్ తాడుతోటి ఇక్కడ నర్రతోటి కడతాం. Hello children, welcome to digital class. Today we are going to learn an important and interesting topic from the topic statistics. The learning objectives of the today's class is the students will be able to find a mean, median and mode of ungrouped frequency distribution. Now we take up the marks of 24 students in formative assessment 1. Now children, what is it you observe from this data? What can you find from this data? Yes, we can find the mean, we can find the median and we can find the mode of the given data. So, the previous class you learned about what exactly is mean, what is mode and what exactly is a median. So, let us quickly recall what are the terms which you have taken in your previous class. So, what are the measures of central tendency? The measure of central tendency are arithmetic mean or simply called as mean, median and mode. So, we are going to learn these concepts for a ungrouped frequency distribution table. So, to start with the first one, which is arithmetic mean or simply mean. So, what exactly is mean or arithmetic mean? If you take observations,
the sum of the observations by total number of observations is called as arithmetic mean. So, if you take observations as x1, x2, x3 goes on up to xn as n values of variable x, then the mean or arithmetic mean of the values is given as x bar is equal to sum of the observations by total number of observations. So, x bar is equal to the observations are x1, x2 goes on up to xn. So, it is x1 plus x2 plus x3 goes on plus xn divided by n. So, we can write in a simpler way as sigma xi divided by n, where sigma stands for the sum of the observations. So, when you take a problem, simple problem here, if the mean of 6, 4, 7, p and 10 is given as 8, we are going to find the value of p. So, what exactly is mean? The mean of the observations is given as sum of the observations by total number of observations. So, what is the data here? The data is given as 6, 4, 7, p, 10 and the mean is given as 8. So, it means that the value of x bar is 8. So, we know that the mean x bar is sum of the observations by number of observations. So, x bar is 8. So, 8 is equal to 6 plus 4 plus 7 plus p plus 10 divided by 5. So, when you add 6, 4, 7, 10, we are going to get 27. So, 8 is equal to 27 plus p by 5. So, cross multiply this, you can multiply 5 and 8. So, 5 into 8 is equal to 27 plus p. So, 5 into 8 is 40, 40 is equal to 27 plus p. So, therefore, the value of p is 40 minus 27. So, 40 minus 27 is 13 children. So, the value of p from this data is 13. So, what type of data we have got here? The data whatever you got is ungrouped data, a raw data. Now, if at all you take marks of the 24 students as it is, now what you are observing here is some of the observations are repeating. See, 17 is repeated, 20 is repeated. Likewise, some more observations you find it as repeated. So, when you just recollect here, whenever any observation is repeated, the number of times it is repeated is what is called as frequency. So, we generally represent the frequency with f. So, when you take the data as ungrouped data here and when the repetition is there, we are going to take the arithmetic mean formula like this. So, if x1, x2 goes on up to xn are n observations with the frequencies f1, f2, f3 goes on f2 up to fn. So, it means that the observation x1 is repeated f1 number of times, x2 is repeated f2 number of times, x3 is repeated f3 number of times and goes on, xn is repeated fn number of times. So, when you take the sum of the observations, is going to be f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 plus goes on plus fn xn, and the total number of observations is given as f1 plus f2 plus f3 goes on up to fn. So, you want to find the arithmetic mean. So, arithmetic mean is nothing but the sum of the observations by total number of observations. So, the mean x bar is equal to sum by number of observations. So, you can say it is x bar is equal to f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 goes on fn xn divided by fn plus f2 plus f3 goes on up to fn. So, when you take up this in a shorter notation, you can write this as mean x bar is equal to sigma fi xi divided by sigma fi. So, the sigma stands for the sum ith observation. So, fi is a frequency of xi. When you take the arithmetic mean of ungrouped data here, we can solve this by two methods. One is what is called as the direct method or also called as simple method, and the second method which you got is called as deviation method. So, we are going to discuss about these two methods in finding the arithmetic mean for an ungrouped frequency distribution. For this, we take up the first method, the direct method or simple method first. So, in direct method or simple method, we straight away use the formula, the mean x bar is nothing but sigma fi xi by sigma fi. So, you need to find out sigma fi xi and find out sigma fi and divide them, you get straight away get the mean x bar. Deviation method. So, what is that you do in the deviation method? We are going to make an assumption of mean. So, we assume one of the convenient observation as assume mean. So, we call the assume mean as A. After doing that,
from each of the observation we find the deviation of it from the assumed mean. So, if the observation is xi and assumed mean is a, so we are going to find the deviation as xi minus a. If xi is observation and then the deviation is given as di is equal to xi minus a, where a stands for the assumed mean. So, we find fi into di and hence sigma fi di is. So, after getting this, we are going to take the mean as x bar is equal to a plus sigma fi di divided by sigma fi. So, the difference between the earlier method and this method is you are going to add one a here. There was no a here, you are going to add a here. Instead of xi you got di here, where the value of di is nothing but xi minus a. We got a frequency distribution of ungrouped nature. The first row is nothing but the x values and the second row is nothing but the frequency values given here. So, for this you are going to find the mean by both the methods, the direct method, second method the deviation method. This is what is the data we got here, x and f values given here. So, we construct a table here. So, we construct a table, the first column is the x values, second column is the frequency values and the third column is the multiplication of the frequency and xi values. So, the xi values are given here as 10, 30, 50, 70 and 89 and the frequency values are given as 7, 8, 10, 15 and 10. So, after getting these two values you just add up all the frequency values, sigma of phi value is nothing but the n which is nothing but 50. So, total number of observations is 50. Now, you are going to fill up the values of fi into xi. For that you are going to multiply the frequency value with the corresponding xi value. So, 10 into 7 is going to be 70, 8 into 30 is going to be 240, 10 into 50 is going to be 500, 15 into 70 is going to be 1050 and 10 into 89 is going to be 890. Now, when you add up all these values, the fi xi values, you are going to get sigma fi xi. So, when you add up the values, you are going to get it as 2750. So, you got sigma fi as 50 and sigma fi xi as 2750. So, because you are going to do the problem by a simple method or direct method, the formula is going to be mean is x bar is equal to sigma fi xi by sigma fi. So, we got sigma fi xi value as 2750. So, it is going to be 2750 divided by sigma fi value is 50 by 50. So, what is it you find? You got a 0 and 0, you can cancel off these two here. Now, we got 275 by 5. So, when you divide it, you get the value as 55. So, therefore, the mean is 55 by this method. So, let us do the same problem by using the deviation method. So, in deviation method, so this is what is the data you got, the x values and f values. Now, we are going to create a table here. The first column is nothing but x values, second column is the frequency values and third column you are going to take di is equal to xi minus a, where a is a assumed mean and fourth column you are going to take fi into di. So, what is the given information? The xi values 10, 30, 50, 70 and 89 and what is the frequency values given? 7, 8, 10, 15 and 10. So, when you add up all the values you are going to get the sum of the values as 50 here. Now, we are going to make an assumption of mean. So, you see here one of the xi values you are going to take it as assumed mean as per the procedure. So, we select one of the values because you find that 50 is in the middle of the table here. So, you have taken a is equal to 50. So, it is not compulsory that you are going to take a is equal to 50, you can take any other value, but because it is in the middle we have taken a is equal to 50. Now, after getting this assumed mean from each and every xi values you are going to take deviation of 50. So, di is equal to xi minus a is the formula. So, first value is 10. So, 10 minus 50, 10 minus 50 is minus 40 children. Likewise, what is 30 minus 50? Yes, it is minus 20. Now, what is 50 minus 50? Yes, it is going to be 0. And what is 70 minus 50? It is going to be 20. Next value is going to be 89 minus 50. So, 89 minus 50 is going to be 39 children.
After getting the value of di, now what is the next step you are going to do? You are going to multiply the frequency with the deviation value. So, Fi into di values you are going to find out. So, Fi is 7 and di value is minus 40 in the first thing here. So, it is 7 into minus 40, which is going to be minus 280. Next 8 into minus 20 is going to be minus 160, and likewise 10 into 0 is 0, 15 into 20 is 300, and 10 into 39 is going to be 390. So, you are going to add up all these values. So, minus 280 minus 160 plus 300 plus 390. The middle value is 0 is ignored here. So, now when you add these negative values, minus 280 minus 160, it is minus 440. When you add 300 plus 390, you are going to get as 690. So, minus 440 plus 690, it is going to be 250. So, the sum of the frequency into deviation value is nothing but sigma Fi di, which is 250. Now, you got sigma Fi di value and sigma Fi value. Now, we are going to use a formula. So, what is the formula, children? So, the formula is x bar is equal to a plus sigma Fi di divided by sigma Fi. So, what is the value of a you have assumed here, children? It is nothing but 50. So, a is 50, assume mean is 50. Now, sigma Fi is given as 50 and sigma Fi di is given as 250. So, using this you can write the mean x bar is equal to 50 plus 250 divided by 50. You can cancel off 0 and 0, and 25 by 5 is 5. So, it is 50 plus 5, which is nothing but 55. So, you are observing that the earlier simple method or direct method and the deviation method both are giving the same answer. Either direct method or deviation method, the calculation is going to be very easy. So, children, we have observed that both the direct method and deviation method have resulted in same answer. So, the calculation of the mean using any of these two methods are relatively easier. I hope that you have understood. Let me go for the next measure of central tendency. We are going to take up the data of 24 students again. Now, what is it you observe? You got the data of 24 students scattered like this. Now, if at all you want to find the measure of central tendency called as median, what is it we do? We arrange the data in an increasing order. So, the lowest observation is 8 and the highest observation is 20. So, we arrange the data in an increasing order or maybe in a decreasing order. After arranging, if at all you are going to find the middlemost value, which measure you are going to use? We are going to learn about the median for a ungrouped frequency distribution. Median is defined as a measure of middle term when the observations are arranged in either ascending order or descending order. So, we are going to arrange the data in either ascending order or descending order. So, let us take the number of observations as n. If you have got n as odd number, then the median is a value of n plus 1 by 2th observation. So, it is going to be n plus 1 by 2th observation when you got a odd number. But when you got an even number, then the median is the average of n by 2th and n by 2 plus 1th observation. So, here for this you are going to take a distribution here where you got the value of x and corresponding Fi value. So, here the value of x is given as 10, 30, 50, 70 and 89 and corresponding frequency values given as 8, 7, 8, 10, 15 and 5. For this data you are going to find the median. First part is nothing but the value of x and second value is frequency. So, you just write the x values as it is from the table here and the corresponding frequency values as it is. Now, to get the middlemost value here, what you are going to do is you are going to find out the cumulative frequency. So, why cumulative frequency is required? So, to if at all you know the cumulative frequency, then we can find the middlemost observation. So, to get the middlemost observation, you are going to find out the cumulative frequency. So, for finding the cumulative frequency, what you do is first value 7 as it is you can put it here. So, the first value is 7. Now, the next one you want to get the value of the frequency which value is less than 30. So, less than 30 means you are going to add these two values. So, it is 7 plus 8, 7 plus 8 is going to be 15.
Now I want to get the cumulative frequency up to 50 here. You are going to add these three values 7, 8 and 10. 7 plus 8 is already 15, 15 you are going to add to 10. So 15 plus 10 is going to be 25. Now again, to get the accumulation up to 70 here, you are going to add the first, second, third, fourth. So first three values is already 25. So 25 you are going to add 15. So 25 plus 15 is, yes children, it is 40. And finally get the accumulation up to 89. So 89 the value is given, a frequency value is given as 5. So you are going to add 40 to 5. So 42 to 5 is 45. Now just see here, the total number of observations is 45 and the last accumulation is also 45. So if these two are same, then our table is perfectly alright. This table is what is called as a cumulative frequency distribution table for ungrouped data. So what is the value of n here? The value of n is 45. So is 45 odd number or even number? Yes children, it is an odd number. So once it is an odd number, then the median is given as formula n plus 1 by 2th observation. So value of n is 45. So it is 45 plus 1 by 2th observation. So 45 plus 1 is 46, 46 by 2 is 23rd. So you are going to have 23rd observation. So to get the 23rd observation, you have to just compare, is 7 less than 23? Yes. Is 15 less than 23? Yes. Is 25 less than 23? No. Now the first time you see that the number has cumulative frequency has crossed the observation here. So the place where it has crossed, this has to be highlighted. So the area where you got this is what is called as the median class. So after getting this, you identify the corresponding x value, the corresponding x value where you got this observation. So what is the 23rd observation? The 23rd observation is 50. So the median is 50. I hope that you have understood this method of finding the median when you have got ungrouped data. Now when you have taken the data again of the 24 students, now see here 17 is repeated once, twice, thrice. Likewise when you take 20 here, 20 is once here, 2 here, 3 times here, likewise 4 times. So you see that from the data here, some of the observations are repeated. Which observation is repeated most number of times? Yes, from the data it is 20. So whenever an observation is repeated most number of times, what is the measure you are going to call it as? Yes, your guess is right, it is what is called as mode. Mode is nothing but the value of the observation which occurs most frequently. So that is an observation with maximum frequency is what is called as mode. So whichever observation is repeated most number of times, that is what is called as mode. So let us take an example here. If the mode of this course 3, 4, 3, 5, 4, 6, 6, x is 4. Find the value of x. The value of the x is unknown here. You are going to find this x value, but we know that what is the value of mode. The mode is given as 4. The observation is repeated how many times? 1, 2 times. The observation is 4 is repeated also 2 times, and the observation 5 is not repeated, but the observation is 6 repeated 2 times. So 3 is repeated 2 times, 4 is repeated 2 times, and 6 is also repeated 2 times. Now here out of these two, none is maximum, but what is given here is mode is given as 4. So what is the mode actually? The mode is nothing but the most frequently occurring data. So which is the most frequently occurring data here? All are occurring equal number of times, but there you got one number called as x, because it is said the mode is 4. The observation 4 should be repeated more number of times. So the observation 4 should be repeated one more time so that the mode becomes 4. So you can say that the value of x is 4. So let us go for the mode of ungrouped frequency distribution. Find the mode from the following distribution. So what you are observing is the size of shoes given as 6, 7, 8, 9, 10, and number of shoes sold for a day is given as 12, 15, 3, 4 and 3. So let us find the mode of this data. Now from the observation, now tell me which is the most frequently observed observation here from this. Yeah, so which is the highest frequency? The highest frequency is 15. So you see that 15 is the highest frequency. So 15 is repeated most number of times.
So which is the corresponding value of 15? The corresponding value is 7. So we can say that the mode of the data is 7 because the shoe size 7 is repeated most number of times. How many times? 15 times. So hence you can say the mode of the data is 7. How is it you are going to find out the measures of central tendency, mean, median, mode, right, for a ungrouped frequency distribution? Now let us take another important aspect. What is going to happen when you are adding some terms or when you are multiplying some terms to the data, and you got the deviations in the value of central tendency. What do you mean by deviation in the value of central tendency? So what exactly is going to happen when the data is changed to the central tendency, that is either mean or median or mode. So for that we take the first one, the deviation in the value of mean. So you take the data as 4, 5, 6, 9, 10, 10 and 12. So when you want to find the mean of this data, what is that you do? You add up all the observations, divide by number of observations. How many observations are there? So here it is 7 observations. So sum of the observation is 4 plus 5 plus 6 plus 9 plus 10 plus 10 plus 12 by 7. So when you add up all the values, it is going to be 56 by 7. So 56 by 7 is going to be 8. Now what is going to happen when you add a number 4 to each of the observation? So if 4 is added to each observation, then the data will be, for the 4 you are going to add 4, so it is 4 plus 4. Likewise 5 plus 4, 6 plus 4, 9 plus 4, 10 plus 4, 10 plus 4 and 12 plus 4. So 4 plus 4 is 8, there is 9, 10, 13, 14, 14 and 16. So the data has become as 8, 9, 10, 13, 14, 14, 16. So every time you see that there is an increase of 4. You want to find the mean of this data. So the mean is nothing but sum of the observations by total number of observations. Total number of observations again 7. So when you add 8, 9, 10, 13, 14, 14, 16, you are going to get it as 84 by 7. So 84 by 7 is going to be 12. Now see here, 12 is 4 more than 8. So it is 8 plus 4. So when you are adding 4 to the observation, the mean is also added by same number. So you can conclude that if 4 is added to each value, then the mean increases by the same number 4. Okay. So children, if at all you have got the same thing for a median, right? The median of 4, 5, 6, 9, 10, 10 and 12 you are going to find out. And what is going to happen when there is a deviation? So because you are observing it as 7 observations, so it is odd number. So the median is the value of n plus 1 by 2th observation. So here it is 7 plus 1 by 2th observation, which is nothing but 4th observation. So what is the 4th observation, children? Here 1, 2, 3, 4. The 4th observation is 9. So you can say the median is 9. Now the question is, you are going to add same value to all the observations. So you are going to add 4 here. So 4 is added to each observation. Then to 4, when you add 4, you get 4 plus 4, 5 plus 4, 6 plus 4, 9 plus 4, 10 plus 4, 10 plus 4 and 12 plus 4. So you get the values as 8, 9, 10, 13, 14, 14 and 16. Now when you find the median of this, it is again n plus 1 by 2 the observation, of which is nothing but 4th observation. So what is the 4th observation? 4th observation is 13. So 13 you can always write as 9 plus 4. So again you observe that when 4 is added, the median also gets added by same number 4. So if 4 is added to each value, then the median also increases by same number 4. So let us take the same data 4, 5, 6, 9, 10, 10, 12. What is the mode of the data? Whichever is repeated most number of times. So 10 is repeated the most number of times. So you can say the mode is 10 because 10 is repeated 2 times, the most number of times. Now we are going to add 4 to each observation. So to each and every observation we add 4. What is going to happen? You get 4 plus 4, 5 plus 4, 6 plus 4, 9 plus 4, 10 plus 4, 10 plus 4, 12 plus 4. So the values are 8, 9, 10, 13, 14, 14, 16. Now if at all you want to find the mode of this data, the mode of the data is 14 because 14 is repeated twice as compared to others. So you see that it is again 10 plus 4. So when 4 is added, the mode also increases by same number 4. So if 4 is added to each value, the value of the mode increases by 4.
So, whether it is mean or median or mode, when added, when all the values are shifted by same amount, then the measure of central tendency also shifted by same amount. When you are multiplying the same process when you do for the multiplication also, we find the same result when all the values are affected by the same multiplicative values, the measure of central tendency also are multiplied by the same value. So, let us see a simple table here. This is what is the original data which you have got. The mean, median, mode are given as 8, 9 and 10. Now, when you are adding 4 to the data for each and every observation, what happened to the mean? The mean added by 4, median added by 4, mode added by 4. Now, when you are going to multiply the observation original data with the number 3 here. So, 4 into 3 12, 5 into 3 15, 6 into 3 18, 9 into 3 27, likewise 10 into 3 30, 10 into 3 30 and 12 into 3 36. So, what is going to happen to the mean? You see here the mean is also getting multiplied by the same number 3. So, it is 8 3 is 24. The median is also getting multiplied by the same number 3. So, 9 into 3 is 27. The mode is also multiplied by same number, 10 into 3 is 30. So, whether you are going to add or multiply, the mean, median and mode also vary in the same way. So, let us see what exactly has learned in your current class. We have learned about the mean, median, mode for a ungrouped frequency distribution. We have learned about the deviations of the value of the measures of central tendency, what happens when you add or when you multiply. Likewise, you can also apply for subtraction as well as division. Write yourself. The following table shows the weight of 200 parcels in a transport office. The weight and number of parcels given. So, the weight given as 50, 65, 75, 90 and 100, and the number of parcels given as 25, 34, 38, 56 and 47. So, make a note of this question, children. Now, you are going to find the mean, median and mode for this data. So, for finding mean, use both the methods, simple method and deviation method, and also find the median and mode of this data. So, having learned about the measure of central tendency, mean, median, mode, we are going to learn about another interesting topic in the next session. Thank you, children.